हाँ स्मृति, या शम्मी। वो एक तो अच्छा मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी पहली बात तो, है ना? शम्मी, लाइव वीडियो में आवाज नहीं आती है किसी की भी। अच्छा वो आई समझ टोल्ड गया। यू इन द मॉर्निंग। ठीक है सिर्फ ठीक है। क्वेरीज आएंगे कमेंट्स में। वो कमेंट्स में नीचे आ जाएंगे, हाँ। हाँ हाँ। ठीक है तो अभी और अगर वो कुछ भी लिखेंगे तो दैट इज ओनली अभी रिटन अभी अभी कमेंट्स अभी एंड ठीक है ठीक है। रिटन क्वेरीज। तो अभी चालू हो गया पर मुझे कमेंट्स अभी दिख नहीं रहे हैं, अच्छा साइड में आ रहे हैं ना वो कमेंट्स। आएगा धीरे धीरे। ठीक है ठीक है ओके। हाँ हाँ। तो अभी चालू हो गया है। ठीक है। ओके ग्रेट। अभी मैंने वो कनेक्शन चेंज किया, नेट का थोड़ा स्लो था हाँ, वो। और जब आप बोलना शुरू करेंगे ना तभी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ओके एक दो वर्ड बोले ना तो पता नहीं चलता ऑडियो आ ठीक है। रही कि नहीं या प्रॉपर। या हाँ तो मैं हाँ शुरू कर ओके। दूं क्या? आप शुरू कीजिए। हाँ सेशन शुरू कर दूं, हाँ। हाँ। अच्छा। और लोग ओके। धीरे धीरे आना शुरू होंगे। हाँ हाँ। और मुझे दिख जाएगा कितने लोग आ रहे हैं साइड पे। हाँ हाँ सब दिखेगा। ओके ठीक है। तो आप भी हाँ, आ जाओ पहले सेशन में। हम तो आ चुके थे। हाँ दोबारा आ जाओ, अभी सेकंड मैंने। पे ज्वाइन हो गया, हम आ रहे हैं वहीं पे हाँ हाँ ठीक हम। है। ओके सी यू। Hi Urmila, nice to see you. So I'm glad that you shared that post with Dola also, and then Smriti contacted me, and yeah, so I'm glad to be sharing with people here in the community here. So yeah, so nice to see you, and probably others also joining. Smriti is there now, uh, and this. Yeah, so this topic that I was thinking about topic to start with, and I said connecting across differences. And so there's a title there's a book by one of the NVC trainers, and Deanne Killian, her name is, and there's probably one more co-author. And yeah, hi Smriti, I'm good, and I'm glad that you can hear me. This is the first time that I'm doing a live like this. Uh, Probably I've done some other Facebook Live, but it seems the quality has improved now. So yeah, so the title of the book was Connecting Across Differences, and that was one of the first books that I read on NVC, and it helped me uh, look at difficult situations. And while I was reading that book, some other friends of mine who were needing support, they contacted me, and then I discovered that I could help them. Then I discovered that I could help them with whatever knowledges that I was getting from there. So yeah, like briefly, I can share about my NVC journey, that why I got into NVC, and it's like I was. So what was happening was that I was in Bombay and working in films and documentaries and things like that, and then I was finding difficulties there, and so I could not connect. Like at times, whenever there was a challenge, I could not deal. I didn't know how to deal with it. So either I would go inside and not feel good about it, and it would impact my health, or maybe I would speak to people in a way that I would also not enjoy. And and then I came across other groups also, like Shikshantar and things, and some other people who work in communities. And there also I was working, and whenever there was a challenge, none of us knew how to deal with it. So we would slip into defense and attack, or blame, or talking behind the backs. So then again, I realized that this is something that I want to change about myself, and I'm seeing myself also equally as a part of it. Because growing up, we had never been taught of any other ways of dealing with conflict. So and that time I came across, and plus my own personal life, where I went through a divorce, and where when the disconnection happens, I didn't know how to deal with it, and how to take my share of responsibility and not take the guilt and things like that. So all these things that attracted me to nonviolent communication. And when I saw it, I often give an example to people that whenever I kind of used to earlier go to bed,
I would have somebody or the other who has made my life difficult. Okay, I'm hearing now. I'm seeing other comments also. So I would see somebody who had made my life difficult, and then when I started working with nonviolent communication, I found that I could process whatever challenges that came across, and either I could process it with the people, or even I could process it later on after the conflict had happened. So yeah, so I got into NVC, and there I got more and more into how to go through challenges, difficult conversations, and yeah, so here I am offering some of the things that I learned from there. So maybe let me ask. So I don't know. Can somebody help me? How do I know that how many people are there in the conversation? Event logs. Yeah. So yeah, I mean, so I was thinking that we can use a little bit of questions also. So maybe I wanted to ask. I mean, like maybe like how many of you kind of feel that they find it difficulty or challenges in in some kind of conversations. So if I hear more responses, it's going to be more fun for me, uh, and then we can take it up from there also. Okay, thank you, Urmila. Okay, yeah, yeah. Thanks, Urmila, for pointing that out. I still can't see it, but it's okay. I That's enough for me. So yeah, so I think it's a probably a given thing that a lot of us feel difficulty in some conversations. So maybe so what are the common difficulties? The people who have come here, if they want to see that, why do they find it difficult to engage in a conversation which is like uh, yeah. So Urmila, my question is. Uh, One is that when do you have some difficulty in some of the conversations? That's one. Probably we do. I think my answer would be yes, most people. But maybe if you have another answer, you don't find it, that's also fine. Uh, and if you have difficulty, what are the blocks? Where do you get stuck? So I'm probably wanting to hear some of the examples that people have, even in the text they can write. So yeah, so I'm as I'm waiting, I can also speak up some things that the difficulty is that in that sometimes we think that if we speak up, the other person will get hurt, or they will get yeah, they will feel bad about it, or they will blame ourselves, they will stop talking to us, all these kind of things. Uh, Difficulties people are willing to talk but not listen. Also, uh, that the difficulty is that when we talk, people won't listen. So what I'm trying to say, Smriti, the question is that when we think that a conversation is difficult, what do we imagine that's going to be the difficulty before we start the conversation? You know. So and Rishi is saying that people are willing to talk but not listen mostly. So then how do you deal with that? That they're willing to talk but not listen. So how do you ensure that they listen? So that's one of the things that, and one thing is there that people are not willing to listen because they are not sure that they are being heard. So maybe if we start listening to people initially, and when they are heard, because sometimes they are blocked and they don't want to listen because they want to
share their pain or their challenge. And how do we listen to people? So, and the listening could be that we try to be present to them, or when we listen to them, that we tell, we let them know that this is what we are listening. Is this what they are saying? We keep checking with them. So people might not accept, understand, take responsibility, might argue, defend, or run away. So yeah, that's also a fear that they may not understand, or they will run away, or also we have this fear that they will get hurt. So that's another part, that how do we speak in such a way that our language doesn't sound like uh, yeah, we can even tell them the intent why we want to have the conversation. uh, and Muzaffar is saying that how to comment clearly to ensure message sent and message received. Okay. Yeah, so there are a lot of questions coming. One is that how do we ensure listening, and how do we listen to other people? So as far as how do we listen to other people, I can say that if we can reflect and let them know that this is what we have heard. If somebody says that you never come on time, and you know and I keep waiting for you, and it's been so messy, and so then you can check with them that what is disturbing you, and you can check them in different ways. You can check them either by summarizing and say that, oh, is this what is disturbing you, that I have not been able to, that you need support, or you need some predictability, or you need that if there's a commitment, that commitment is to be kept. So that's one way of listening to other people. uh, yeah, I'm hearing Smriti also. uh, yeah, you can do that also, tell them the intent, which means after the telling the intent, you can take the permission also, that this is my intent, and that's why I want to talk to you. Like yesterday somebody said that to somebody, that they were telling us, that, oh, I'm going to make some dosa, and even a simple thing like that, and I had to ask them, but are you just offering them, or are you asking them to come along with you? So yeah, so the clarity of intent in any conversation helps. And I was answering to this one question. They may not understand or take responsibility, might argue, defend, or run. So the first part was, how do I listen, which I said you can reflect them, you can reflect their needs. And then how do I speak and make sure that they are listening? So which is uh, as like another way is that after you speak, you can ask them, do you get it, or can you know what you understood of me, or do you understand it's important for me, that there's and this part is a bit difficult because people who are not used to reflecting may not be able to reflect. Or sometimes when they respond, that's another way. If I say something and the person responds as if they've heard something else, and then you can check with them that, oh, are you thinking that I'm saying this, that you should have not done it? They say, yeah, that's what you're saying. So this is a bit of a hard thing, that you preempt what are they listening from you. Like for example, I tell somebody that that I'm I would like to eat something else rather than what they prepared, and the person says that yeah, but I did my so much effort to make it such a nice thing. So which means that probably they are hearing that I am saying that they didn't do a good job. So when I can check with them, because if they are not used to reflecting, I can check with them that, oh, are you feeling that I have said, or are you thinking that I am saying that you didn't prepare well? He said, yeah, but that's what you said. So this is another way of checking. Or if you sense that what you have said, they are hearing something else, you can check with them that, is that what you are hearing. So that's one way. And if somebody is there, you can ask them like, can you tell me what you heard me say? Or if this person can't do, you can ask somebody else also. You can ask somebody else who is in that space to hear that, what are you hearing me say? And sometimes I even use that, if there is a third person there and I'm not able to understand some one person, then I ask this other person that, can you help me understand what this person is saying? And
Yeah, and then this Smriti is saying that midway I might drift from my intent and calm. Yeah, that's a interesting thing. That how do you? And so the question for me in a conversation is that uh, that the intent you can still kind of shift, and if you shift from the calm, that's also a problem, but that's also kind of okay, but it depends on what do you express in your disturbance. When you are angry or hurt, you what is it that you're telling the person? Like, are you saying that they are wrong, or in your anger you're also saying that this is what I need, like I might sometimes tell somebody that I need some care, damn it, so that's also there. Yes, Smriti, that's right. Ask, what are you hearing me say? Because the other person is triggered, and when they hear the another person, your meaning, and then you can correct them. No, but this is not what I'm saying. This is what I mean. And yeah, that's perfectly. Thank you for helping me with this. And yeah, yeah. But that's a difficult skill, and you may not be able to do it. That's true. And when you are not able to do it, you can. The other difficult part is try to listen to yourself. When you are triggered, then you can say, oh shit, I'm really tired, I'm just exhausted with this conversation. I don't know how much to take on with this. So you can then try to listen to yourself, or your own noise, or your own judgments, that yeah, I'm thinking that this person thinks that um, that I don't care for them, or whatever comes to you, or you know so this kind of a thing. And somebody had said other thing. And how do I, when I drift from my intent and calm? So the intent that you have to keep coming to, and the intent can also change, because you might start the conversation with one particular intent and then it changes. But the broader the intent, if you try to keep it that to build connection, to build understanding, and as far as calm is concerned, it's sometimes also okay to tell people that this is very disturbing for me, and they might not be able to use to it, and it might trigger something more for them. But this could also be a useful thing, and habit of blaming rather resolving and punishing, maybe. Okay, thank you, Smriti. तो या तो जो एक दूसरे को ब्लेम करने की बात है, तो बेसिकली जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन भी कहता है, जो मार्शल का भी काम था, कि कैसे हम इससे निकलें बाहर, कि हमें ये सही गलत की जो सोच है, और फिर पनिशमेंट रिवॉर्ड जो हम चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो सोच है, ये हमारी बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसके कारण जो हमारी भाषा है, उस भाषा में हमेशा राइट रॉन्ग ही आ रहा है, ब्लेम ही आ रहा है। इसलिए कभी बार जब हम झगड़ा होता है और उसके बाद उसमें गहराई में जाते हैं, फिर हमें पता चलता है, तो कहते हैं, ओह, तो आप ये सोच रहे थे कि मैंने आपको ब्लेम किया, या उनको ऐसे सुनाई दे रहा था। तो हमारे जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, that itself is like has so many judgments in it. So that's true, that that we are full of like and how do we move out of defense and attack and blame? So the other is that whenever कुछ conflict होता है, हम देखते हैं कि सामने वाले को क्या करना चाहिए। अगर सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी बजाय हम अगर ये देखेंगे कि हमारी क्या ज़रूरत है, तो ये एक तरीका है उससे बाहर निकलने का, from that right wrong thinking, or from like blaming the other person. That's also one. And how does let's talk about how does non-violent communication in a very simple way help us, allow us to do these difficult conversations. So the first, in NVC, there are four things which are very basic, and they can be used to have more and more nuanced, solving more nuanced issues. And in that, the most basic is the first step is that getting some clarity about observations. That what is your observation, which means that या you're right कि गलत सही में फंसे होते हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए जो पहला आता है, कि जब किसी को आप सुनते हो, देखते हो, आपको लगता है कि इसने ये कर दिया, ये ऐसा ही है, ये मेरे को केयर नहीं करता है, मैं चाहती हूँ ये ऐसे सोचता है, तो ये हमारे अंदर इस तरह का है। तो अगर उसमें से हम ये देखना शुरू करें कि क्या हुआ, कि एग्जैक्टली क्या मैंने कहा,
क्या मैंने सुना, या तो उस पर हम फोकस करें, रादर देन कि मुझे लगता है ये इंसान ऐसा है, मुझे लगता है इसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी है। तो अगर हम इस पे आ रहे हैं क्या हुआ, और ऑब्जर्वेशन को हमको ऐसे देखते हैं जैसे कि लाइक एक सीसीटीवी कैमरा देखता है, नो। तो ये जो, हाँ, पास्ट की सारी गलतियों को निकालने लगते हैं, तो ये सब भी हमको देखना है कि जो पास्ट की सारी गलतियाँ निकालने की जो बात है, वो एक जजमेंट्स वाली बात है कि हम उन पे किसी के बारे में जजमेंट कर रहे हैं कि पास्ट में वैसे ही थे या उन्होंने ये किया है। और जब गलतियां पे निकालते हैं, तो क्या उन गलतियों में हम ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। तो इट्स ओके अगर मुझे कि तुम्हारी किसी बात से 15 साल पहले चोट पहुंची है या 5 साल पहले चोट पहुंची है, पर अगर वो भी हो रहा है तो हम ये पूछ सकते हैं कि भाई, ये मैंने देखा था, जब आपने ऐसे मुझे बोला आप कमरे से बाहर निकल जाओ, रादर देन, या निरीक्षण करना इज़ द परफेक्ट थिंग। तो पहला स्टेप जो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन का है कि डू द ऑब्जर्वेशन एंड मूव आउट ऑफ इंटरप्रिटेशन टू ऑब्जर्वेशन। और अगर इंटरप्रिटेशन है भी तो उस इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी लो कि मैंने ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा था, इसलिए उससे मैंने ये इंटरप्रेट किया है। और जब आप, एक स्टेप ऑब्जर्वेशन का है, एक और स्टेप आपका है अबाउट फीलिंग्स का, कि जब जब कुछ होता है आपको अपना कंपस चेक करना है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, या मेरे को दुख हो रहा है, या मेरे को ट्रस्ट पैदा हो, या मेरे को मतलब कनेक्शन महसूस हो रहा है। तो जो भी चीज़ें आपको आ रही हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स पे पहले आप नज़र मारिए कि क्या हो रहा है, और फीलिंग्स से आप सेंसेशन भी सुन सकते हैं और अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी कर सकते हैं आप चाहें तो, कि भाई मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। और तो ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, और फीलिंग जो है कहाँ से पैदा होती है, इसका मतलब उद्गम कहाँ से होता है। तो एक जो मैंने समझा है कि फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारी कुछ मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। और या तो क्रिटिसिज्म जो आने की बजाय, तो क्रिटिसिज्म तो एक लंबी चीज़ है, पर पहली चीज़ है कि क्या हुआ है, ट्रिगर क्या है, उस ट्रिगर को ऑब्जर्वेशन के टर्म में बोला जाए। और ये जो क्रिटिसिज्म है, इसके पीछे दूसरी चीज़ है कि भाई अगर आप अपनी नीड बताओ रादर देन उसने ये गलत किया है। सो आई कैन शेयर माई नीड, कि भाई ये मेरी नीड है, और आपके ऐसा करने से मेरी ये नीड पूरी नहीं हुई, और इसलिए मैं इसको ऐसा महसूस कर रहा हूँ। और इसको ऐसा नहीं कि उसको उतना लिटरली आपको ऐसे बोलने की ज़रूरत है, पर आपको देखना है कि पीछे इस तरह से, मतलब कि ये प्रिंसिपल्स, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं कि नॉट टू फॉरगेट कि व्हेन यू आर वांटिंग टू गेट सम कॉमन ग्राउंड, यू टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशंस। बिकॉज ऑब्जर्वेशन में आप दो लोग अग्री कर सकते हैं कि ऐसा हुआ था, दरवाज़ा खुला था या बंद था, गैस चालू थी या ऐसी थी, कुछ भी हो सकता है कि कौन कमरे में कहाँ बैठा था, कौन कमरे में अंदर था, बाहर था, और किसने क्या बोला। क्योंकि किस बोले को क्या सुन सकता है, वो आप संभालना बड़ा मुश्किल है कि किसका क्या ट्रॉमा है उस शब्द से, तो वो कैसे सुनेगा। सो ये ऑब्जर्वेशन है, फीलिंग है। और जो चौथा स्टेप है उसमें आपका रिक्वेस्ट का, कि कैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे, कि कैसे आप उसमें आप अपनी रिक्वेस्ट रख सकते हैं, सो और रिक्वेस्ट में भी आपको देखना है कि जो रिक्वेस्ट और डिमांड में, दोनों में फ़र्क है। कि डिमांड जब हम लोग को करते हैं तो हम अक्सर कुछ उसमें मना, नो नहीं सुनना चाहते हैं, यू नो हम लोग उसमें जो डिमांड होती है उसमें सिर्फ कई बार अपनी ज़रूरत का ही ध्यान रखते हैं, सामने वाले की ज़रूरत का ध्यान नहीं रखते। तो ये भी देखने की ज़रूरत है। तो ये जो ये 4 स्टेप्स हैं, दिखने में बहुत आसान से लगते हैं, कि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, नीड्स हैं, और रिक्वेस्ट है। अब इसी में क्या है, ये आपके अपने खुद के हैं, और सामने वाले के अंदर भी ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड आ रहा होगा। और अगर वो आके कहता है कि कमाल है आपने कुछ भी नहीं किया, तो फिर मेरे को लग रहा है कि ये ऑब्जर्वेशन तो बता नहीं रहे हैं। तो अगर वो एनवीसी शायद पहले से भी करते हैं, मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है। पर अगर वो नहीं करते हैं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ओह, तो आपने ऐसा देखा, इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं क्या कि मैंने ये हेडफोन यहाँ रखा हुआ था, इसलिए आप गुस्सा हो रहे हैं क्या? बोले कहा हाँ, तो अगर वो कह भी रहे हैं तो आपको उसमें से ये देखना है कि उन्होंने क्या देखा होगा। तो कई बार उनकी आदत नहीं होती है लोगों की, औरों की, तो आप उनसे गेस कर सकते हैं। तो फिर आपको और डेटा मिलने लग जाता है कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया।
और एक और चीज़ होती है, हमें डिसर्न करने की ज़रूरत है कि जो फीलिंग हमको आ रही होती है, तो फीलिंग के साथ हमारे अंदर हम सोचते फीलिंग है, पर वो एक विचार ही आ रहा होता है कि उनको ऐसे होना चाहिए, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो ये मोर लाइक अ डिफरेंस बिटवीन फीलिंग एंड थॉट, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये नीड जो हो गया, और नीड में भी आपको फ़र्क करना है कि मेरी नीड अभी मतलब मोबिलिटी की है, नीड कार की है, आप छोड़ के आओ। मेरी नीड है केयर की है, या आप मेरी केयर करो, या इस तरह से केयर करो। तो उसको बोलते हैं नीड और स्ट्रैटेजी की बात। तो ये इन चारों की भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम डील करें, सो लेट्स चेक विद अदर पीपल दैट कि क्या वो देखते हैं इन चीज़ों में, क्या सवाल उनके आ रहे हैं। वैसे साथ साथ सवाल आ भी रहे हैं, और स्मृति बहुत ग्रेटफुल कि तुम उसको इकट्ठा करते जा रहे हो। या मेरी क्या ज़रूरत है जो पूरी हुई है और जो पूरी नहीं हुई है। और ये पवन जी कह रहे हैं गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स एग्रेसिव टू इम्पोज सॉरी व्हाट वेज लेफ्ट टू प्रोटेक्ट सोसाइटी। पवन जी, आपको मैं सुन रहा हूँ कि अगर समाज में ऐसा कुछ आ रहा है तो हमें कैसे करना है। तो उसमें वही सुनाई दे रहा है मुझे कि तो आपका फॉर एग्जांपल जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉर्पोरेट एग्रेसिव है और क्या कर रही है, तो क्या ऑब्जर्वेशन आप शेयर करेंगे कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, टाइप ही कर सकते हैं आप कि क्या हो रहा है। और जब तक पवन जी की बात आती है तो हाँ, तो ये बात समझना कि मेरी ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत ऐसे लाइक लाइफ फोर्स है, कि जब आपको जैसे सांस आती है उसी तरह से है कि एनर्जी आपकी कंजर्व कर रहे हो। और ये जो आपकी नीड्स हैं, ये आपकी ज़रूरतें हैं, ये आपकी लाइफ एनर्जी है। तो उसको पूरा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कैसे, चाहे वो आपकी नीड फॉर फूड हो, ईज़ हो, रिस्पेक्ट हो, या यू नो so Urmila is saying that Esther Pearl said that if the feeling is followed by the word that, even it is a thought, yeah. So yeah, so I feel that you should be doing it. I think that, you know, so that would be, that's mostly a need. But there's one very nice example which I would say that anything that you can make an emoji, anything that you can make an emoji is a feeling, and what you can't make an emoji of is a thought actually. For example, you can't make a thought that you should care for me. I can't make an emoji of that, but I can definitely make an emoji of that when I have a need for care, and when you don't care for me I feel sad. So that's an emotion. So so how does that sound, this idea of an emoji? This is my friends Ranjita and Aditya, they in Bangalore, they talked about this explanation. It was very nice. Yeah, yeah. So I'm doing this Facebook live, and I'm not used to sessions where I don't hear anybody, and of course I see the comments. So it's difficult to either focus on the comments or speak. Uh, Thank you, Ansar. So maybe we can use this time, some of this time, and like people can ask questions, and I can also uh, understand what they're looking for. And yeah, there was a question by on the corporates and the government. So Pavanji, if you are around, uh, can you tell me like what is the governments are doing which is aggressive or to impose on society? So what is it? Give an example of it.
यस, yeah. So Pavanji, you are disturbed by all these things, and you want us to live with more in alignment with you can live more in alignment with like care for the environment and care for the planet. If that's what you want. Yes, Smriti, मोरलेस मैं यही कह रहा हूँ कि या so it depends on, can you apply your thoughts on the drugs taking people. It all depends on like what is your intention. If you want to like listen to them, understand them, or if you want to educate them, or if you want to support them, if you want them to support the healing. So each of the choice will decide on what you want to do. Or if you want to just keep the world safe from them in a very short run, then that's what also it's done, that people are put in asylums and where they don't have any space, or access. या रीटा जी, बात सही है कि भाव जो है हृदय से उत्पन्न होता है और विचार दिमाग से, और जब दोनों का मिश्रण होता है तो संतुलित मात्रा में तब सब ठीक होता है। या तो जो दिमाग होता है हमें ये समझने में हेल्प करता है कि अ, हमारे क्या बिलीव्स हैं, क्या विचार हैं। दैट्स ट्रू। और आई थिंक आपको, जब आपको दिमाग से आपको पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो मैं तो बोलूँगा कि वो आपको नीड की तरफ लेके जाता है, कि आपके दिमाग में जो हो रहा है, क्योंकि आपको क्या चाहिए उस तरफ जाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मुझे। और शायद दिमाग ये भी अपनी नीड्स भी देखने में हेल्प करता है। तो ये जो बात है कि भाव हृदय से उत्पन्न होता है और विचार दिमाग से, इनका मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मिश्रण किस तरह से किया जाए। कि मतलब इस ये अवेयरनेस ही है कि भाव यहाँ से आ रहा है और विचार दिमाग से, पर ये है कि विचार भाव को सही बात है, भाव को इन्फ्लुएंस करने लग जाता है। तो इसलिए हमको देखना है कि जो विचार है वो हमें अपने पुराने बिलीफ से जुड़ा हुआ है, हम जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है, उसमें से क्या हमको रखना है क्या नहीं रखना है उससे जुड़ा हुआ है। सो कोई किसी को सवाल आ रहा है इस बारे में कि कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो तो बता सकते हैं। ओके, आई हेयर यू स्मृति। So, one also I want to ask Smriti, like, what is the duration that we have planned for this call? It's 1.5 hours, no? So then I know that what is the time for questions. So that's what also I wanted to clarify. So दिमाग से चलना ठीक है या दिल से? So I think दिमाग का अलग फंक्शन है। दिमाग आपको खासकर ऑब्जर्वेशन करने में बहुत हेल्प करता है, चीज़ों को डिसर्न करने में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वो होने के बाद आप कैसा महसूस करते हो आपके अंदर। और वो करने के बाद आपको तुरंत इस पे जा सकते हो कि आपकी क्या ज़रूरत है जिससे जिससे महसूस कर रहे हो। तो दिमाग भी चाहिए आपको। तो ये जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ये थॉट वाला पर्सन है और ये हार्ट वाला पर्सन है, तो दिमाग आपको अ, तो यू मीन टू से दिस क्वेश्चन अराउंड कि दिमाग से चलना ठीक है या दिल से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो दिमाग है आपको आपको ऑब्जर्वेशन करने में, चीज़ों को देखने में, रियलिटी को बहुत हेल्प करता है। और एक बार आप रियलिटी को देखते हो फिर उससे आप कैसे इम्पैक्ट होते हो, ये भी एक सवाल है। तो वो फिर आपके अंदर फीलिंग आती है। पर ऐसा नहीं कि आपको दिमाग पे नहीं रहना है, दिल पे नहीं रहना है। हर एक का, दोनों का अपना फंक्शन है। नॉट दैट वन थिंग इज़ सुपीरियर और नॉट। पर एक दिल से अलग चीज़ आएगी जो आप महसूस कर रहे हो। आप दिल जो है
आप महसूस कर रहे हो, कैसा आपका उससे असर पड़ रहा है, कैसे आपके साथ इंटरफेस उस चीज़ का हो रहा है, वो उसका असर दिल पे पड़ता है, आपकी क्या महसूस कर रहे हो। तो या तो कमिंग बैक टू दिस डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन, मेरे लिए तो यही है कि आपने, और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग आपको ध्यान रखनी है कि डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन के लिए, कि आपके, जब आप किसी चीज़ से परेशान हो रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपकी परेशानी वहाँ पे पैदा हो रही है या आपके पास्ट में से है, कि आपके पास का कोई ज़ख्म है या वूंड है जो कि आपको बार बार ट्रिगर करता है, क्योंकि आपकी कुछ अनमेट नीड्स रही हैं किसी चीज़ के लिए, और वो अगर पूरी नहीं हुई हैं तो आपको वो कभी भी आप उसमें, या सो तो जब आप, जो आपके जो ट्रिगर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी टीम में किसी ने ऐसे किसी को बोल दिया कि तू करती क्या है, पर वो क्वेश्चन ऐसे था कि तू, ये जानने के लिए कि भाई तेरा क्या दिन भर का शेड्यूल होता है, पर या तेरा दिन भर कैसे क्या काम करती है, ऐसे पूछ लिया, तो उसको लग गया कि तू करती क्या है। तो ये वाली जो बात है कि हमको देखना है कि हमारे कौन सा शब्द कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कल्चर में ऐसे उंगली करना बड़ा खतरनाक है, किसी के शब्द, घरों में कोई एक शब्द बोल देना उनके लिए बहुत बुरा है, यू नो तो आपको ये देखना है कि कौन से पास्ट वुंड्स आपके ट्रिगर हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम में भी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में बहुत ज़्यादा हमारा स्ट्रगल होता है कि कोई जना किसी छोटी छोटी बात से ट्रिगर हो रहा है, तो हमारे को छोटा लगता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके वैसे पेन पॉइंट है। जैसे किसी को हो सकता है कि डोमिनेशन की आदत नहीं है, तो उसको जैसे ही उससे सफ़र किया हुआ है, उसका ट्रॉमा है, तो जैसे ही कोई जना आता है जो ऐसे डोमिनेशन जैसा कुछ करता है, तो उनको लगता है ये वही जना आ गया है। तो फिर वो जो पुराना जो है पेन है, वो सारा अलाइव हो जाता है, और उस सारे पेन के साथ आप अपना तीर चलाते हो लोगों पे, और वो कहते हैं भाई मैंने तो इतनी सी बात बोली थी, ये क्या हो गया। तो उनको नहीं पता कि आप पास्ट कुछ चीज़ों को ट्रिगर कर दिया है, सो या when ये जो रीटा कह रही है कि सिर्फ भाव से इंसान संत बन सकता है या सिर्फ हैवान बन सकता है, जहाँ जाता है भी बन जाता है, पर दिमाग जब भाव पर काम करता है तब भी शायद ठीक रहता है। वैसे ही सिर्फ दिमाग बहुत सेल्फिश पता नहीं बनाता है, दिमाग और दिल मिलाकर ही जीवन सुंदर बनता है। सो आई थिंक बोथ आर इम्पॉर्टेंट, जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, क्योंकि दिमाग मेरे को देखने में हेल्प करता है कि अभी क्या हो रहा है, अगर मेरा दिमाग बहुत कलर्ड है और पेंटेड है और मैं उसको देखने नहीं दूंगा, तो वो कुछ और भी कहानी देख लेगा। बट अगर एक ये वाली बात है, और फिर उसके बाद मेरे को ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इससे मेरी फीलिंग क्या हो रही है, ये इस तरह की बात है। सो या तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये पास्ट वुंड्स वाली बात है, तो किसी को अपने अपने ट्रिगर पता होने चाहिए कि मेरे को ये ट्रिगर करता है। तो यह आता है, जैसे बता सकते हैं कोई जना, मैं चाहूँगा लोग शेयर करें कि उनको क्या ट्रिगर करता है। तो विच मीन्स कि जब कुछ ट्रिगर होता है उसकी जिम्मेदारी उसकी भी है, क्योंकि सामने वाले ने तो कुछ ऐसे किया होगा जो छोटी चीज़ पर हमारे अंदर उसकी बहुत बड़ी पेन है, तो हमको कुछ भी ट्रिगर कर सकता है, जैसे मेरे को अगर कोई कह रहे कि अगर मैं खाना बना रहा हूँ और बोले कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मेरे को भी ट्रिगर कर जाता है कि ये मेरी ऑटोनॉमी ले लेगा, ये मेरे को चांस नहीं देगा, या तो सुचित्रा को ये बात तो शायद समझ आई कि ये ट्रिगर्स हमें लिए बहुत ज़रूरी इनको समझना, पर कैसे हम इन ट्रिगर्स को ओवरकमिंग दीज पास्ट ट्रिगर्स एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, और हम कर सकते हैं, पर इसके लिए ऑलमोस्ट हमारी हीलिंग जर्नी है। तो कई तरीके हैं। तो अगर आप पास्ट ट्रिगर्स में जब जाके देखेंगे कि क्या हुआ था, जिससे आपको चोट लगी है, तो आपको देखना होगा कि क्यों किसी ने किया था, मतलब उनकी ज़रूरत आप देखना शुरू करिए, यू नो सो अगर आप उनकी ज़रूरत देखते हुए एक थोड़ी सी भी ह्यूमननेस उनमें देख पाए, तो आपके लिए आप उनके प्रति थोड़ी सॉफ्टनेस आ सकती है। पर अगर आप उनके प्रति ह्यूमननेस नहीं देख रहे, अपना सिर्फ विक्टिमहुड देख रहे हो, तो भी आप शायद नहीं उसको बदल पाओगे, उस रिलेशनशिप को, और जैसे आप उसको सोचते हो, क्योंकि यू मे स्टिल बी सफरिंग फ्रॉम इट इवन इफ द अदर पर्सन इज गॉन आउट ऑफ इट। तो किस तरह से हम ये इस बात में निकलने की ना, या यस, तो ट्रिगर मैनेजमेंट है।
बट ट्रिगर अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैं तो कहता हूँ कि लोगों को टी शर्ट पहन के घूमना चाहिए कि दिस इज़ माई ट्रिगर, अपने घर में लगा देना चाहिए कि किस किस का क्या ट्रिगर है. अब मे बी यहाँ पे लोग बात कर सकते हैं, कोई लोग अपना ट्रिगर शेयर कर सकते हैं कि क्या चीज़ उनको ट्रिगर करती है, एंड अगर वो उनको ट्रिगर, अब जैसे कोई जना अगर सफाई पसंद उस तरह से रहा हुआ है और उनके घर पे वही रहा था और उन्होंने वो ढल भी गया है. कई घरों में सफाई पसंद होने के बाद भी क्या पता उस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं हो, तो मान लो वो ढल गया है और कोई दूसरे जने के साथ रहता है तो फिर उनको बहुत सारा चैलेंज आएगा. और अभी किसी ने बोला था क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन भी होता है, तो या दैट्स ट्रू, क्रॉस कल्चरल भी होता है. बट किसी ने मुझे विविट करके एक ट्रेनर है, उसने अच्छा बोला था कि जो क्रॉस कल्चरल है, एवरी एनी टू पीपल आर क्रॉस कल्चरल, कि दो भाई हैं, दो बहनें हैं एक ही घर में, उसका जुड़वा भी हो पर वो भी इतने क्रॉस कल्चरल हो जाते हैं. तो कुछ तो हमारे अंदर का भी सीड होता है और कुछ जो माहौल भी हमको मिलता है, तो दोनों चीज़ें प्ले करती हैं, उसकी अपनी अपनी यूनिकनेस है. या तो अगर मेरे अंदर कुछ ट्रिगर हो रहा है तो आई कैन गो एंड सी माई, कि मेरे को अगर असर हुआ है, मेरे को कहाँ से असर हुआ है, और फिर उसको अपन एड्रेस कर सकते हैं, सो कंपैशन एक नीड है. और आई थिंक कंपैशन को लाने के लिए एक प्रोसेस को करना होगा, मतलब कंपैशन, अदरवाइज कोई जना जो ट्रॉमा से गुजरा उसको उसको कंपैशन मिलेगा तो डेफिनेटली अच्छी बात है, पर उसको बहुत स्मॉल स्टेप्स कराने होंगे और उसको ऐसे जगह पहुंचना होगा कि क्या उनके बीच में हो रहा है. Yes, Urmila is very right. Shammi is very good at helping with live examples when one is going through some personal conflict. I think you got it right, because I am so used to being an interface. Yeah. So अगर किसी को अभी कोई लाइव एग्जांपल भी हो, या नॉट जस्ट लाइव एग्जांपल में दोनों जने यहाँ पे होने चाहिए, पर लाइव चैलेंज हो कि उनको चैलेंज आ रहा है, बट मे बी हमारे लिए टेक्स्ट में करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर किसी को वो भी ट्राई करना है तो कर सकता है, पर थोड़ा समय है हमारे पास. बट या बट ये तो इस पे तो काम करना ही चाहिए, इसीलिए मैं कहूँगा ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको ऐसी बनानी है तो उसमें आपके अंदर शायद हर एक जने को कुछ तरह का सपोर्ट या थेरेपी होनी चाहिए, जिसमें उनको पता चले कि उनके क्या ट्रिगर्स और एग्जाम्पल्स हैं, या अगर किसी को आइडिया चाहिए यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, ऑन माई नंबर, एंड फाइंड आउट फ्रॉम हेयर. हमारे पेज पे इंस्टाग्राम पे उस पर लिखा हुआ है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, देन यू कैन ask these things. Yeah, so that's also possible. So anything else that is coming to people? Yeah, and there's these really big things like cycle of abuse, trauma, and practice of. So yeah, बार बार कई बार लोग कहते हैं हाँ मैं तो ठीक हूँ, मेरे को नॉर्मल चल रहा है, पर what they've gone through and how it has impacted by them, and as I'm sensing or I've understood that how trauma can actually even change your DNA, and impact you. Yeah, if you want me to give an example of a conversation, or somebody else wants to bring in their challenge and then I can respond to it. So yeah, let me also hear that since I'm sharing this, how are people feeling? What is it that they are taking from this? Okay, yeah, that's a good question. Like बहुत सारे examples हैं जहाँ पे कि I've done things differently. Uh, yeah, yeah, give me a moment, कि क्या कौन सा pertinent होगा. तो सपोज़ एक अगर मैं अपने किसी करीबी दोस्त से साथ रह रहा हूँ, रूम शेयर कर रहा हूँ, स्पेस शेयर कर रहा हूँ, और उसको लगता है कि रूम इस तरह साफ़ रहना चाहिए, पर वो उस पर परेशान हो रही है और वो कॉन्स्टेंटली कहती रहती है कि देखो इसने ये गलत कर दिया, इसने वो ऐसे कर दिया. तो मेरे को उस टाइम पे ऐसे लगेगा कि ये मैं कैसे डील करूं, बिकॉज जब वो कहती है तो मैं उनके बारे में सोच लगता हूँ कि यार किसी को ब्लेम किया जा रहा है, किसी को ऐसे किया जा रहा है, तो वाई वाई इज शी ब्लेमिंग देम, एंड व्हाट शुड आई डू.
सो पहला तो स्टेप उसमें ये काम आता है मुझे कि मुझे समझ आता है ये उनकी पेन है, और अगर मैं रिलैक्स रहूँ कि यार उनकी पेन है, उनको अपनी पेन सुननी है, किसी और ने कुछ किया है और उन दोनों ने किया और उनको असर पड़ रहा है, ये दोनों बेचारे पेन में है, मैं सुन सकता हूँ। पर अगर मैं इस तरह सुनूंगा कि ओ मेरे को कुछ करना है, मेरे को इनको बचाना है, मेरे को घर को ऑर्गेनाइज करना है, मेरे को इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आई थिंक पहला तो एक स्टेप है कि आप ये मान के चलो कि हर जने की अपनी जर्नी है और वो उससे गुजर रहा है और वो उस जर्नी में अपनी चैलेंजेस अपने तरह से डील करेगा। आप उसके साथ अवेलेबल रह सकते हो, पर उसकी प्रोसेसिंग की आपको जिम्मेदारी पूरी लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे प्रोसेस करती है, क्योंकि सेम सिचुएशन में वो कभी किसी और मूड में डिफरेंट तरह से डील करेंगे। अगर वो आज परेशान है तो उनको कोई भी बात ट्रिगर कर रही होगी। तो ये भी जो है कि कैसे सामने वाले को ये बात असर पड़ रही है, उस बात को समझना, और ये उनका चैलेंज है रादर देन टेकिंग इट अपॉन योर सेल्फ, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प होती है। और दूसरी बात एम्पति से, कि लाइक अगर झगड़ा चल रहा है और वो बंदा कुछ कुछ बोल रहा है और वो बोलते बोलते बीच में मुझे कुछ लग रहा है कि आई कैन चेक विद देम दैट ओ इज़ दिस व्हाट यू वांट, आपको ऐसे चाहिए था क्या। और अगर मुझे लग रहा है कि मेरे कुछ एक्शन से हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लूँ, या मतलब मैंने उसको ऐसे देखा और उससे मैंने ऐसे रिएक्ट किया। सो या Uh, yeah, like I can tell you with my own family, there's a conflict going on. And when you say resolution, हम सोचते हैं कि उसको वहीं पहुंच जाए जहाँ पे था। तो कई बार रेजोल्यूशन नहीं होता है, बट उसको कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। कि जैसे मेरे घर का भी कॉन्फ्लिक्ट मेरे फादर से अगर चल रहा है कई सालों से, उसमें कुछ हमारे फैमिली में लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और झगड़े होते जा रहे हैं और टोटल कट ऑफ है। तो अगर ऐसा होना है तो फिर शायद एक्सेप्ट भी करना कि अभी हमारी इतनी कैपेसिटी है, अभी हम इतना ही कर सकते हैं, और रादर देन ब्लेमिंग योर सेल्फ एंड डेस्परेटली गोइंग एंड ट्राइंग टू फिक्स इट। ऐसे भी हो सकता है, पर उसमें भी मैंने देखा कि जब जब आप अपने अंदर का भाव उस जने के लिए बदलते जाते हो तो उससे भी चीज़ें बदलने लग जाती है, सामने वाले की एनर्जी भी बदलने लग जाती है। तो ये भी बात है। तो इस तरह से मेरे फैमिली में मेरे फादर से जो चैलेंज था जिसमें कि मैं उनसे कैसे डील करूं, और तो मैं उनके प्रति अंदर अपने मन में भाव बदलता रहा। और उसके बाद अगर मैं जाता हूँ तो जिस बात से मैं सहमत नहीं हूँ वो बात भी मैं रखता हूँ, अपने मन में रखता हूँ चाहे। और जो उनको बेसिक लगता है कि हाँ ये इसमें इनको एक्सेप्टेंस भी चाहिए, वो भी मैं देने की कोशिश करता हूँ। Yes, conflict transformation is the word instead of resolution I would prefer. Okay, if you help other people resolve conflicts, then you have to see what your borders are, where do you go. Then again, there's a question which Dominic Barta uses that वो conflict resolution में काम करता है और transformation पे। तो जब वो कहता है कि उसको कोई इंक्वायरी आती है या कुछ सपोर्ट की कॉल आती है तो पहले वो देखता है कि मेरे को क्या सपोर्ट चाहिए ये करने के लिए, कि आपके वो सपोर्ट है कि नहीं, ये सवाल आता है। सो या so there is just to summarize that to have a difficult conversation, you need to understand the needs of the other person, try to get their observations also if they can't speak, and hear demands, also make or hear requests in their demands. और दूसरी बात ये कि जब आपको अपनी बात रखनी है तो उसमें आप कैसे क्लियर ऑब्जर्वेशन करें और अपनी फीलिंग्स को बताएं या अपनी ज़रूरतों को बोलें और अपनी रिक्वेस्ट भी करें। तो मतलब ये वाला एक तरीका है। और दूसरी बात है कि अपने जो ट्रिगर्स हैं और पैटर्न्स हैं, अपनी स्टोरीज़ हैं, उनको भी आप देखें। और शायद सामने वाले की भी जब स्टोरी आ गई, समझ आ गया है कि उनको ये बात ट्रिगर करती है, तो फिर उसी चीज़ों को बहुत केयर से आप बोल सकते हैं। जैसे मेरी पार्टनर ने बोला कि सुबह उठते ही तुम प्लीज़ अगर जब बेड से उठते हो तो चादर को आप फोल्ड कर दिया करो, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि, और मेरी पेन ये है कि मेरे घर में मेरे फैमिली में मैन ने नहीं किया। तो अब अगर मैं चादर फोल्ड करता हूँ तो मैं इसलिए नहीं फोल्ड करता हूँ मेरे को चादर फोल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि उसका मेरी पार्टनर का ट्रिगर है, और अगर वो ट्रिगर को मैं केयर कर दूंगा तो मैं उसको केयर दे सकता हूँ, और अभी जब वो प्रोसेस कर लेगी कुछ टाइम में तो ठीक है। बट हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी की दूसरे को बता भी देते हैं कि ये हमारा ट्रिगर है और इस तरह से होता है।
So I guess we are coming to close about an hour. ओके, ये अभी रीटा ने बोला है, मैं एक फ्लैट में रहती हूँ और फ्लैट के लोग सार्वजनिक सीढ़ी पार्किंग साफ नहीं करते। ऐसा नहीं कि सभी गड़बड़ है, पर कुछ के कारण सभी ने सफाई को छोड़ दिया है। तो हालत ऐसी है कि मैं खुद यह जिम्मेदारी ले रखी हूँ। आप बताएं कि और क्या विकल्प हो सकता है। तो पहले तो आपको कैसा लगता है ये जिम्मेदारी लेके, क्योंकि आपको ये देखना है कि दो चीज़ें हैं, कि एक तो वो लोग काम नहीं कर रहे और आप ये उसको काम कर रहे हो, ये जिम्मेदारी लेते हो। तो पहले आपको देखना है कि ये आपकी ज़रूरत है और उनकी शायद ज़रूरत है नहीं, इसलिए उनको उस सीढ़ी में चलता है। अब आप उनको ये प्रूव कर पाओ कि इस सीढ़ी को ऐसे रखने से हाइजीनिक है या नहीं है, वहाँ पे एक कॉन्वर्जेशन की स्पेस है। बट या तो अगर ये करते टाइम आप कैसा भाव अंदर रखना चाहते हो, कि आप बोलोगे कि देखो कोई नहीं करता, मैं ही करती हूँ, मैं ही सफ़र करती हूँ और अल्टीमेटली मैं ही सीढ़ी करवा रही हूँ, और इतने सारे लोग के होने के बाद मेरा ही क्यों ठेका लिया हुआ है कि मैं उसको। तो वो उनके मन में आ सकता है कि कि आप किस भाव से उसको देख रहे हैं, और आपके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन स्पेसेस हैं, आपकी सोसाइटी जो है उसमें क्या सिस्टम्स हैं जिसमें कि लोग डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं, नो। सो ये आपको देखना है कि कैसे आप आपके बीच में क्या सिस्टम है, खासकर ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि अगर आपका सिस्टम नहीं तो बार बार उनसे वही चीज़ पे जूझते रहोगे। एंड उर्मिला इज शेयरिंग समथिंग दैट शी लाइक्स द आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। या तो ये बहुत अच्छी बात बोल रही है उर्मिला, कि बहुत लोगों को लगता है कि एनवीसी कर लिया ना, अब कैसे हो गया, अब ठीक हो जाएगा ना, अब ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स मोर लाइक फॉर एग्जांपल इन इंस्टाग्राम, यहाँ पे हमारी टीम चल रही है, तो हम ये भी हमारी पॉलिसीज़ है कि कैसे किसी का एग्ज़िट होगा, किन कारणों पे एग्ज़िट होगा। तो ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्वालिटीज़ हमें चाहिए, कैसे हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। तो या और ये जो सो मैं इंट्रो मैंने थोड़ा सा बताया था कि मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट है उस सेक्टर में काम कर रहा था, और फिल्म में भी कर रहा था, और वहाँ पे भी स्ट्रेस था। और अपनी मैं बॉडी और हीलिंग में पहले आया, इसमें कि मैं क्या खाता हूँ उस पर सोचने लग गया, कैसे खाना मेरा उगता है उस पर सोचने लग गया, और फिर अपने आप को मैंने अस्थमा से हील किया। तो ये मेरी हीलिंग जर्नी थी, जो उसमें मैंने देखा कि मैंने फिजिकल हीलिंग तो कर ली, पर मेरे मेंटल स्टेट में अभी भी वही सारा कचरा भरा हुआ है, या कॉन्स्टेंटली मैं वापस उसी में पैटर्न में जाता हूँ। तो उससे मैंने फिर एनवीसी में आया, और एनवीसी में आने के बाद मुझे समझ आया कि इंटरपर्सनल जो रिश्ते हैं उसमें वन टू वन हम कर सकते हैं, और एक समूह में हम कैसे काम करेंगे, जो रोज़ रोज़ हमें काम करना है, रोज़ रोज़ चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, तो वो किस तरह से होगा। और उसके दौरान मुझे सोशियोक्रेसी मिली, जो कि एक कोलैबोरेटिव सिस्टम है, कि यू नो कि सहभागिता से वो चलता है, ये मतलब पार्टनरशिप में चलता है। तो और सोशियोक्रेसी करने के बाद मुझे लगा कि उसको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो मैं कहाँ पे करूँ। तो मैंने कहा चलो एक जगह लेता हूँ, जिसको आना है मेरे साथ आके यहाँ पे रहे, खाने बनाए, जगह को संभाले, और उसकी जो डिसीजन मेकिंग है हम लोग सोशियोक्रेसी के साथ करेंगे। तो वो जगह बनाई, और 2 साल अहिंसा ग्राम के नाम से, तो 2 साल चलने के बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये ये सिस्टम इतना सॉलिड नहीं हो रहा था हमारे लिए। कई लोग शायद करते होंगे पर हमें सर्व नहीं कर रहा था, तो देन आई गॉट इनटू होलोक्रेसी। और अभी होलोक्रेसी इज लाइक ए सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम, और उसमें कहते हैं कि जो इमर्जेंस है वो भी उसी में इमर्जेंस होती है, उसमें ही निहित है उसके। तो या तो अभी ब्रीफली द स्टोरी है, या having these tools allows you to get into fire also. Yeah, yeah. So I guess अभी किसी के सवाल आएंगे तो भी चलेगा, but if people can share what are their learnings from this today's session, I would really appreciate that. And if you want to share, it's fine. If you don't want to share, you can pass. But it's more like I'm moving towards a checkout round, and
Yeah, and I am also acknowledging that, and which is that I am not used to Facebook Live or having a conversation where I'm the only one speaking. Of course, there is a value in it, but so maybe I would have sounded that little more confused, and I was also not confused, but I was struggling with the idea that nobody else is speaking. So, thank you for giving this opportunity, and that I could come and be part of this to Smriti and for Nuntam. Uh, I keep forgetting the name. न्यूनतम वार्ता जो ग्रुप है हमारा और उसमें एंड आई एम रियली एंजॉइंग द सेंस ऑफ कम्युनिटी जो इसमें बना हुआ है और कई लोग आ रहे हैं सो या सो वी कैन जस्ट गो फॉर अ checkout. So if you can share your learnings and experience, Smriti, why don't you start? How was it for you? Yeah, but I also enjoyed it that there were so many people here. और मेरे को किसी को कांटेक्ट करना हो तो शम्मी नंदा भी सर्च करेंगे या मैं अपना नंबर भी डाल सकता हूँ और अहिंसाग्राम हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है वो पेज आप लाइक कर सकते हैं वहाँ से आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं ये मेरा फ़ोन नंबर है और अहिंसाग्राम के नाम से पेजेस है और मेरा पर्सनल पेजेस भी हैं शम्मी नंदा के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है हमारी और एक वेबसाइट भी है थोड़ी बेसिक है पर काम चल रहा है Yeah, so I'm hearing this, Smriti, that idea of forgetting identify my needs. Yeah, we can focus on that. Yeah. So I guess let's call it a day, and we can close the session. Smriti, do you want to add anything? Yeah. So you're saying that we could hear more, like you did hear, or you would like to hear more? Yeah, so we've set up this place called Ahimsa Gram in Jaipur where Smriti has visited us. That where we are working on food and how you can be sustainable with food and healing with food, and also self-management there. Yeah, yeah, that's true. Food-related things and relationship things and self-management. These three things we are offering right now. So please contact us if you want to learn about it. If you have a company and you are struggling and you want it to run more smoothly, with more collaboration, you can contact us for that, company or an organization. So great. So Smriti, do you want to say anything? Uh, any closing comment? So I think we'll close the session now. Smriti, you would like to hear more? What would you like to hear more about other related workshops? So yeah, so we offer workshops. One workshop I'm offering called Being Me, Loving You, and there's another workshop that I'm offering is NVC in Hindi. So that happens on Friday and Saturday. So please contact me.
and I'll share more details from you. Or go to our pages by the name of Instagram, and our pages on Instagram and also Facebook. So I'm just writing the name of my page. Thanks, Urmila, for being there. It was nice to have you and your support also, and for this new medium which I was a little bit struggling. So I guess let's see how I get hang to Facebook Live. But I'm enjoying some of the other things that I'm offering online, and great to see so many people in the community here. So okay, so I'll end the video and we'll upload it. Thank you, everybody. Yeah.